Financial Management Module number 200. From here, we are starting our discussion on what is called capital structure. Capital structure is a very interesting concept, and a lot of research and work is done on the topic of capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर से अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में बयान करूं तो मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस या कंपनी के अंदर डेट और एक्विटी की परसेंटेज क्या है. दिस मीन्स दैट कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ डेट यानी लोन, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और equity, that is the common stocks, and you may also add preferred stocks in it. यानी इन तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है. अगर परसेंटेज ऑफ एक्विटी बढ़ जाए और डेट या प्रेफर्ड स्टॉक की परसेंटेज भी वेरी कर जाए तो हम कहेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील हो गया. तो अ गिवन कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स दैट देयर इज a fixed percentage of debt and equity in this. With reference to capital structure, the interesting concept which actually affects the capital structure is financial leverage. Now, financial leverage simply determines the percentage of debt in the total capital. यानी अगर मेरे पास let's assume 100 million का capital है तो उसमें से कितना debt है. Let's say if the debt is 40 million, so the leverage is 40%. जो बेसिक बात यहाँ पर हमें समझनी और याद रखनी है वो ये है कि जैसे जैसे लेवरेज या फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे शेयर होल्डर्स या इक्विटी होल्डर्स का रिटर्न भी बढ़ता चला जाता है. So when we are changing the capital structure by increasing the financial leverage and reducing the percentage of equity, the return to the equity holders increases, or I can say that it should increase. Now, what does this leverage do? जब हम बैंक से या बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा बोरो करते हैं, डेट लेते हैं, तो उससे फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट होता है. सपोज हमने पैसा बोरो किया एज अ बिजनेस और एज अ कंपनी 10% पर ईयर रेट के ऊपर, और उस बोरोड अमाउंट से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके 15% पर ईयर प्रॉफिट या रिटर्न अर्न कर लिया. तो इस बोरोड अमाउंट के ऊपर जो हमने 15% अर्न किया है उसमें से 10% उसके इन्वेस्टर्स, बॉन्ड होल्डर्स या लोन प्रोवाइडर्स को देने के बाद भी हमारे पास जो इजाफी 5% बच जाएगा ये हमारे इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा. तो शेयर होल्डर्स या जो हमारे इक्विटी होल्डर्स हैं उनका रिटर्न 15% नहीं रहेगा बल्कि वो बढ़ के 20% की तरफ चला जाएगा. एंड दिस इज what is the impact of financial leverage. The picture you see on the screen also depicts that with a lesser amount of investment you get greater return. And this is the job of a lever. यानी लीवर एक ऐसी इन्वेंशन थी जिसके ज़रिए से हम कम फोर्स लगाकर ज़्यादा वेट उठा सकते हैं. तो फाइनेंशियल लेवरेज actually refers to that with a smaller amount that we get higher return. So common share capital is one part of the capital structure in which the financial leverage would affect as a positive return. Then there are preferred shareholders. They are not directly affected by the financial leverage generated through the bonds, but one viewpoint is that preferred shares, because of the fixed cost, also create a financial leverage in a company. Then we have got loans, and finally we have got bonds. तो हम ये कह सकते हैं कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें कॉमन शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स और पब्लिक और प्राइवेट डेट्स होते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज कहाँ से क्रिएट होता है. Concluding our discussion, financial leverage mainly is generated by loans and bonds and other debts, but the fixed cost of preferred share capital also creates the financial leverage. तो जब हम ये बात करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में तब्दीली हो रही है
तो असल में परसेंटेज ऑफ लेवरेज बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, एंड मेनली दिस लेवरेज इज ड्यू टू द डेट.